Hello students, I Trilok Chand Jajoria, faculty of Department of Accountancy in Patagala College. Today I am going to cover the topic of comparative analysis, in which I am going to solve one question based on comparative analysis. Students, this is the question which we are going to solve today. First of all, we need to read out the question, what kind of information is given in this question, so we can use that information to solve this question. So read it. The prepare a comparative revenue statement in a vertical form from the following details. We have given the opening stock, purchases, interest on debentures, depreciation on furniture, depreciation on machinery. Then we have a advertisement, administrative expenses, selling expenses, carries forward, loss by fire, wages, provision for tax. Then credit side we have a sales, closing stock, dividend, profit on sale of machinery, etc. So this is the information given in the question. So we need to mark it up. हमें marking करनी पड़ेगी. So that we can use that information for to prepare the comparative analysis. Student, before solving this question, you need to know the revenue statement, vertical part of revenue statement. If you don't know the format of revenue statement, then you are not going to you are not able to solve this question. So according to the format of revenue statement, we need to mark the information given in this question. The first one is opening stock. The opening stock will be posted in cost of goods sold under the cost of goods sold. So in short, we called is COGS. Then we have purchases, that also the part of COGS. Interest on debenture, that will be minus, or we can say deducted from the operating profit. So I'm writing down the OP as a short form. Depreciation on furniture is there in the office, furniture used in office, so this will go to the administrative office. So I'm using A. The depreciation on machinery is using in the factory building, so that is a part of COGS. Then administrative expenses also will go to the another head of administrative. Selling expenses will be shown under the head of selling, so I'm writing in short S. Carries forward is also come under selling and distribution expenses, so I denote as S. Loss by fire is non-operating expenses, so that I show initial, that is NOE, non-operating expenses. Wages is a part of COGS. Then provision for taxation, that will be deducted from the NBT, net profit before tax में से हम माइनस करेंगे. So net profit तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा. Sales is a starting point of the format. Then closing stock हम माइनस करेंगे COGS में से. Dividend is non-operating income, तो I write it down NOI, non-operating income. Profit on sale of machinery is also the part of non-operating income. Okay, so let's start. So solution, comparative vertical and revenue statement. You need to draw 4 lines, 2 lines for the rupees column, and two columns will be used for comparative statement. So this is the heading of that particular 2013-2014 rupees, and then absolute increase and decrease. The upward arrow shows increase, downward arrow shows decrease. If there is a decrease, then we'll show in a bracket. If there is an increase, then it shows a positive amount. Okay, again you need to remember the format. So student, as per the marking, we will post it down the information in this vertical format. So vertical format start with the sales. So write it down the sales, and amount is 45 lakh rupees in 2013 and 60 lakhs in 2014. So sales is done. Then less, the format says we need to deduct the cost of goods sold from the sales. So less cost of goods sold. So जो भी जहां जहां हमने cost of goods sold लिखा है, वो information हमें sequence में as per the format डालनी है. तो first of all is opening stock. So this is the opening stock.
The amount is 2,25,000 in 2013 and 3 lakh rupees. It's wrongly printed over here. It's not a 30 lakh, it's a 3 lakh rupees. Then next we have a purchases. Purchases में 22 lakh 50,000 in 2013. Then in 2014 32 lakh 10,000. Next COGS is depreciation and wages. So let's closing stock first. This is the credit side information is given 3 lakh rupees and 3 lakh 60. Then wages, we have wages 1,95,000 and 3 lakh rupees. And last part is depreciation on machinery 36,000 in 2013 and 30,000 rupees in 2014. Is there any COGS? No, we have covered all the things. So we need to add it up. This so that this totaling shows the cost of goods sold. So cost of goods sold को total करने पे हमें amount this will come to 24 lakh 6,000 and this one 34 lakh 80,000. So sales में से we need to deduct cost of goods sold. Then we will get the next part that is called gross profit. So that is coming to 20 lakh 94,000 and next 25 lakh 20,000. Then after the gross profit we need to calculate the operating expenses. Operating expenses, as per the format we know, under the operating expenses we have three type of expenses. Number one, administrative. Number two, selling and distribution, and number three, the finance. So in this question the finance is not given, finance expense is not given, so we are not going to write it down here. We only have two type of expenses available, that is administrative and number two is selling and distribution. For administrative, for marking purpose we have used initial A, then for selling and distribution के लिए हमने S से denote किया है. तो less operating expenses, first one is A part, administrative expenses. एडमिनिस्ट्रेटिव में हमने कहाँ कहाँ ए मार्क किया है. नंबर वन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ऑन. देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, only two expenses we have under the head of administrative, so write it down. First one is depreciation on furniture 15,000 and 15,000. Then next we have administrative expenses 2,94,000 and 4,41,000. After that we need to calculate the selling and distribution also. So B part is selling and distribution. So we have a 3S, I think so. Number one, selling expenses, carriage outward. Okay, only two expenses we have under the head of selling and distribution. Number one, selling expenses or carriage outward 75,000, 3,15,000, and then selling expenses we have 4,56,000 and 7,53,000. So that is come total operating expenses. We add all these four amount, so that we will arrive at total operating expenses. So take a total 8,40,000 and 15,24,000. So gross profit में से हमें total operating expenses minus करने पे we are getting the operating profit. क्या मिलेगा हमें? Operating profit. So 20,94,000 minus 8,40,000, that come 12,54,000. Similarly 25,20,000 minus 15,24,000, so we are getting 9,96,000, that is operating profit. अब operating profit में हमें क्या करना है? माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस करना है, दैट इज थर्ड इन क्वेश्चन के अंदर थर्ड सीक्वेंस में थर्ड नंबर पे है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, दैट इज 1,50,000 and 1,50,000 both the year. So after minus हमें क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, सो दैट इज 12,54,000 minus 1,50,000, so that come 11,04,000. Similarly 9,96,000 minus 1,50,000, so we are getting 8,46,000. So स्टूडेंट आगे ये फॉर्मेट और है, बट उसको सॉल्व करने से पहले मैं इसी पेज पे आगे का पार्ट सिखा देता हूँ, लाइक एब्सोल्यूट और परसेंटेज कैसे निकालते हैं. पहले हमें ढूंढना पड़ेगा एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज एंड देन परसेंटेज. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मार्किंग हटाने दो, सो दैट विल बी इजी फॉर अस. ठीक है, अब क्या करना है? वी नीड टू कंपेयर बोथ द फिगर. 2014 के फिगर को 2013 से कंपेयर करना है. देयर विल बी थ्री पॉसिबिलिटी.
Number one, there will be no change. Number two, there may be increase, और number three, there may be a decrease. तो फर्स्ट चीज अगर हम देखते हैं, सेल्स को कंपेयर करते हैं, 2014 सेल्स आई एम कंपेयरिंग विद द सेल्स ऑफ 2013. सो आई क्लियरली से देयर इज ए इंक्रीज ऑफ 15 लाख रुपीज. सो इंक्रीज कर लो 15 लाख. देन आई नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज. इस 15 लाख को आई नीड टू कन्वर्ट इनटू द परसेंटेज. तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है दिस वन, एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज डिवाइड बाय बेस ईयर इनटू 100. बेस ईयर मतलब जो फर्स्ट ईयर होता है हमारा, वो बेस ईयर होता है. इन दिस क्वेश्चन 2013 इज अ बेस ईयर. सो अब यहाँ पे मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है. तो इसमें फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट इंक्रीज में क्या आ जाएगा, 15 लाख रुपए. 15 लाख रुपीज माई एब्सोल्यूट इंक्रीज. इन बेस ईयर में अमाउंट कितना है, 45 लाख. एंड इंटू 100 करने पे आई एम गेटिंग द परसेंटेज ऑफ 33.33%. ओके स्टूडेंट, तो ऐसे हमें कैलकुलेट करना है. सो अगेन आई एम रिमूविंग माई मार्किंग सो यू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आई एम कंपेयरिंग विद 2014 के साथ में. सो देयर इज ए इंक्रीज, ये सुनो, 75,000. फिर उसका परसेंटेज निकालना है. तो अगेन 75,000 डिवाइड बाय 2,25,000 and press the percentage button, because you know the university is allowing us to use the calculator, so you can use the calculator. In exam the calculator is also allowed. So 75,000 divided by 2,25,000, so we are getting the percentage 33.3%. Then purchases पे we need to compare 32,10,000. If we are comparing with the 22,50,000, so it shows clearly there is an increase of rupees 9,60,000. Then 9,60,000 divided by 22,50,000, so we are getting the percentage of 42.67. Similarly, closing stock को भी अगर देखें तो there is an increase of 60,000 rupees. So 60,000 divided by 3 lakh, so we are getting the percentage in 20%. Then 1,95,000, 3 lakh, so there is a absolute increase, दिख रहा है increase, that is 1,05,000. So percentage में 1,05,000 divided by 1,95,000, so we are getting 53.85. Correct? Then depreciation of machinery 36,000 2013 and 2014 में 30. So there is a decrease है, 6,000 का क्या है, कमी है. So that is 6,000. So 6,000 divided by 36,000, so 16.67. Then again cost of goods sold में increment है, 24,06,000 से बढ़ के 34,80,000 हो गया. So that is equal to 10,74,000. 10,74,000 का इंक्रीमेंट हुआ है. और उस पे अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो कितना इंक्रीज हुआ है. सो 10,74,000 डिवाइड बाय 24,06,000, सो दैट इज इक्वल टू 44.64%. सिमिलरली ग्रॉस प्रॉफिट में कितना इंक्रीज हुआ है, 4,26,000. सो 4,26,000 डिवाइड बाय 20,94,000, सो विच इज इक्वल टू 20.34%. सिमिलरली डेप्रिसिएशन में नो चेंज, 15 नो चेंज, परसेंटेज ऑल्सो नो, नील. अदर एडमिन एक्सपेंसेस में देयर इज इंक्रीज, 2,94,000 से बढ़ के 4,41,000 हो गया. सो 1,47,000, दैट इज इक्वल टू 50%. 75 से 3,15,000 हो गया, दैट इज अगेन एब्सोल्यूट इंक्रीज ऑफ 2,40,000. परसेंटेज वाला देखें तो 320%. देन सेलिंग एक्सपेंसेस में 4,56,000 से बढ़कर 7,53,000 हो गया, विच इज इक्वल टू 2,97,000 इंक्रीमेंट. एंड इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें, 2,97,000 डिवाइड बाय 4,56,000, विच इज इक्वल टू 65.13%. देन 6,84,000 का इंक्रीज. देन वी आर नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज. तो 6,84,000 डिवाइड बाय 8,40 इक्वल टू 81.43%. देन 12,54,000 हुआ. ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 12,54,000 से गिरकर 9,96,000, मतलब गिरा है. देयर इज अ डिक्रीज, एब्सोल्यूट डिक्रीज. सो कितना डिक्रीज हुआ है, 2,58,000. दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग इट इन इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी ब्रैकेट में डाला है. सो दैट शोज देयर इज अ डिक्रीज. ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो 20.57%.
Okay, then 1,15,000 no change, nil. Net profit after interest 11,04,000 से गिर के 8,46,000 हो गया. They again decrease of 2,58,000 which is equal to 23.37%. So remaining part जो फॉर्मेट का बच गया वो नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर रहे हैं. So which according to that format we need to add non operating income. Add non operating income. Non operating income में हमारे पास क्या है, एक तो डिविडेंड है, एक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी. तो राइट इट डाउन. डिविडेंड 12,000, 39,000. Machinery, profit on sale of machinery equal to 24,000, and 2014 there is no sale of machinery, so nil. Then non operating expenses लेना है हमें. टोटल नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगी 36,000 और 39,000. फिर उसमें से हमें लेस करना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच इज NOE. कहाँ लिखा था हमने, लॉस बाय फायर. सो लॉस बाय फायर लिखेंगे, जीरो है फर्स्ट में, फिर 15,000 है. और कहीं पे हमने NOE लिखा है क्या, हाँ नहीं है. सो नेट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, इनकम 36 का 36 हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग इनकम कितना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 36,000, एक्सपेंसेस कितना, जीरो, तो 36,000 यहाँ पे. 39 में से 15 गया, सो वी आर गेटिंग 24,000. ठीक है. सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये कैसे मिलेगा, हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला हुआ 11,04,000, उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर देंगे. सो 11,04,000 प्लस 36,000 विच इज इक्वल टू 11,40,000. सिमिलरली 2014 में भी 8,46,000 प्लस 24, 8,70,000. ओके, अब उसमें से हमें एक चीज माइनस करनी है, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स. सो लेस इनकम टैक्स 5,70,000 and 4,35,000. Now finally we are getting net profit. So 5,70,000 and 4,35,000. So that is the correct answer. So 5,70,000 and 4,30,000 exactly matching with the question's figure. Question में जो net profit का figure दिया हुआ है, look at left hand side, I have circled it. 5,70,000 and 4,35,000 exactly matching with that. So that is that's we have converted the question into vertical format correctly. Again we need to calculate absolute increase decrease and then percentage. So 12 से 39 हुआ तो absolute increase of rupees 27,000. So 27,000 divided by 12,000 and percentage calculate करते हैं तो 225.00%. 24 से 0 decrease 24,000 which is equal to 100%. Then 3,000 का increment और 8.33. 0 से 15,000 हुआ, 15,000 का इंक्रीज, परसेंटेज में नॉट एप्लीकेबल. क्यों, क्योंकि डिवाइड बाय जीरो करेंगे तो आंसर का आंसर जीरो आएगा. इफ आई एम डिवाइडिंग 15,000 डिवाइड बाय जीरो, सो आई विल गेट जीरो, सो दैट्स व्हाई अगेन नॉट एप्लीकेबल. सो 12,000 का डिक्रीज विच इज इक्वल टू 33.33%. 11,40,000 माइनस 8,70,000, so there is again decrease of rupees 2,70,000 which is equal to 23.68%. लेस इनकम टैक्स करते हैं तो इनकम टैक्स का भी देखो, अगर देखेंगे तो इनकम टैक्स भी कम भरना है, 135, so equal to 23.68%. and finally 1,35,000 का decrease and 23.68%. so we have solved it comparative. Sometimes question is asking the analysis part कि comparison कर लिया आपने, comparative analysis कर लिया, then you need to pass the comment कि what you have understood from this comparative analysis. so क्या समझ में आ रहा है, अगर हम गौर से देख पा रहे हैं, if you are looking carefully, that we are finding that कि there is a decrease of profit 1,35,000. in 2013 the company was earned 5,70,000 profit, but in 2014 their profit reduced to 4,35,000, मतलब 1,35,000 का प्रॉफिट कम हुआ. So the company needs to identify the reason why this profit reduced of rupees 1,35,000. So अगर हम ध्यान से देखें तो सेल हमारी इंक्रीज हुई. फर्स्ट स्टेप वी नीड टू लुक दी सेल, क्योंकि प्रॉफिट गिरने का फर्स्ट थिंग क्या हो सकता है कि हमारी सेल्स कम हुई होगी. बट अगर हम क्वेश्चन में देखें, सो देयर इज इंक्रीज ऑफ सेल ऑफ रुपीज 15 लाख.
विच इज इक्वल टू 33%, अप्रोक्सीमेटली 33% का इंक्रीज हुआ है, सेल हमारी बढ़ी है। तो फर्स्ट रीजन इज वाइप्ड आउट, बाहर निकल गया कि सेल की वजह से हुआ है। तो फर्स्ट रीजन तो हमारा वाइप आउट हो गया कि सेल्स की वजह से प्रॉफिट गिरा है, नहीं सेल्स तो बहुत अच्छी हुई है। फिर हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, यस देयर इज ए इंक्रीज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सो 10,74 का इंक्रीज हुआ है, बट देयर इज अ रीजनेबल रीजन फॉर दैट कि अगर हमारी सेल बढ़ी है तो प्रोडक्शन भी बढ़ा होगा, प्रोडक्शन बढ़ा तभी तो सेल बढ़ी है, तो ये रीजन भी हमारा निकल जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा बढ़ा है विच इज गुड साइन, ठीक है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट गिर जाता तो हम कंसिडर करते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कुछ गड़बड़ हुआ है। अगर डेप्रिसिएशन देखिए तो कोई बड़ी बात नहीं। ऑपरेटिंग अदर एडमिन एक्सपेंसेस में देखो यहाँ पे 1,47 का इंक्रीज हुआ है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50%, मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है मैनेजमेंट में कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सडनली 50% बढ़ गया। तो इसका रीजन हो सकता है अगर उन्होंने नए एम्प्लॉय हायर किया ऑफिस में, सो दैट में इंक्रीज द सैलरी पार्ट, द कॉस्ट ऑफ सैलरी में इंक्रीज, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा बर्डन आया हो। फिर अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड, सो 2,40,000 का इंक्रीज, कैरेज आउटवर्ड मतलब डिलीवरी देने के लिए जो एक्सपेंसेस हुए वो 320% हुए, तो एक यहाँ पे सस्पिशियस थिंग हुई। तो कंपनी नाउ नो कि हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट में इशू हुआ है, जिसकी वजह से मेरी सेल बढ़ी 33%, कोई इशू नहीं, बट इतना डिलीवरी चार्जेस कैसे बढ़ गया कि 2,40,000 आई पेड एक्स्ट्रा। तो एक यहाँ पे कंसर्न फैक्टर हो गया कि कैरेज आउटवर्ड को हाईलाइट कर लेते हैं कि भाई इस पे इंक्वायरी करेंगे, वो फर्दर इंक्वायरी करेंगे कि 2,40,000 क्यों बढ़ा। फिर एक और रीजन आता है सेलिंग एक्सपेंसेस भी बढ़े, तो सेलिंग एक्सपेंसेस डेफिनेटली ये समझ में आ जाता है कि जब सेल बढ़ी तो हो सकता है कमीशन भी दिया होगा वो सीजन, तो ठीक है, लेकिन फिलहाल कैरेज आउटवर्ड एक पकड़ पकड़ में आ गया चीज कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो जिसकी वजह देखो सबके ऊपर इफेक्ट पड़ा है। ये 2,40,000 का इफेक्ट सब जगह पड़ा, देखो यहीं से ग्रॉस प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हुआ था बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, जिसकी से नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट भी गिरा है, और उसी का इफेक्ट हमें देखते देखते नेट प्रॉफिट तक पड़ा। सो पूरे एनालिसिस में हमें दो तीन चीजें ध्यान पता चला कि इस पे कॉन्सेंट्रेट करना, कैरेज आउटवर्ड हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की तरफ और सेलिंग एक्सपेंसेस की तरफ, ठीक है। So that was the question from comparative analysis. So student, I hope you have liked this video lecture, and I hope I have cleared all the doubts relating to the comparative analysis. Okay, bye. मिलते हैं next video lecture.